I like the makeup. Hello you guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Janavi Jain and I'm here to make you smile and entertain. So today's video is gonna be haircut video. So yes, you're gonna see me cutting my hair again after that video. So if you want to see how to cut your hair straight, so you can see that video. But if you're like looking for layers, so I am here gonna show y'all how to cut layers. So without any further ado, let's get into the video. So मैंने आज ही हेयर वॉश किया है and after 2 days I'm gonna do something to my hair. You will get to know it soon. So तो मैंने I like the liner. Okay. So yeah. Okay. तो अभी हम first step पे जाते हैं and it's very easy, ठीक है guys. So मैंने बहुत loose कपड़े पहने because I just want it to be. So you guys need a newspaper because hair उसके ऊपर गिर जाएगा and like one scissor. I have my one big fat scissor. You can use any scissor you want. 2 combs I have. Okay. And 2 rubber bands. Okay. So these are the things which you'll need. So let's get started. Okay, first and foremost you have to take all your hair आगे. I'm gonna look like a chudel but that's okay. Okay. So yeah, तुमको ऐसे दिखने वाले तुम भी. तो सब बालों को आगे लेकर आओ पहले. तो सब बालों को लेकर चलिए, सब बालों को, ठीक है. एंड उसके बाद अच्छे से उसको कोम करना जैसे मैं कर रही हूँ. देखना कि इसमें कोई ये टैंगल्स ना रहे. ओके, आई थिंक मैंने सब बाल आगे ले आ चुकी हूँ. यू कैन सी, ठीक है. एंड फिर यहाँ पे एक अच्छा सा टायर है. एकदम टाइट बांधना बिकॉज यू वॉन्ट योर हेयर टू लुक नाइस लेयर्स में, ठीक है. तो मैंने एकदम टाइट बांध दिया है. एंड इफ़ यू आर वेरी न्यू टू दिस तो एक और रबर बैंड चाहिए होगी 2, ठीक है. तब यू नो हाउ मच टू कट. ओके ओके, सो आई एम टाइंग वन मोर रबर बैंड नाउ. ओके, एंड इफ यू आर स्टिल नॉट श्योर यू कैन टाई वन मोर रबर बैंड जहाँ तुम बाल काटने वाले हो, ठीक है. मुझे बहुत छोटे, मतलब थोड़ा ही बाल काटना है, तो मैं इतना बाल काटूंगी. ओके, इतना. ओके, सो इतने बाल कटने वाले हैं एंड फिर लेयर्स आएगा. एंड डीप लेयर्स के लिए सेम स्टेप 3 आएगा. सो नाउ आई एम गोना कट माई हेयर एंड प्रे फॉर मी दैट इट डज द वर्क. बिकॉज मैंने भी ये सब DIY चेक करके ही लिया है. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज द राइट वे टू डू इट. ओके, तो नीचे आ जाती हूँ एंड लेट्स कट दिस. प्रे फॉर मी गाइज, प्रे फॉर मी. ओके, तो मैं बाल काट चुकी हूँ. कैन यू सी दिस? एंड थोड़ा लेयरिंग अच्छे से करने के लिए इसको नीचे से थोड़ा सा ऐसे ऐसे काटने का, यू नो. मैंने दे दिया है. So now I'm gonna open my hair and look.
डीप लेयर्स करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी गोना टेक हेयर फ्रॉम योर लाइक यहाँ से योर से, देन गोना टेक दिस मच एंड देन इसको हम अलग कर देंगे एंड अभी इस बाल को आगे लेकर आएंगे लाइक वी डिड पहले। ओके एंड सेम प्रोसीजर करेंगे हम। क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि हमारी जो लेंथ है बालों की वो कम हो। ओ यहाँ पे कुछ देखो, ऐसे ऐसे नहीं आना चाहिए, तो फिर से करना। So I'm gonna tie again. Okay. Now we are done. You can see layers कैसे दिख रहे हैं, like मेरे बाल oh my god, I like it. Like look at the layers. Okay, so मेरी बालों की लेंथ भी कम नहीं हुई है एंड यू कैन सी लाइक माई लेंथ इज उतना ही, सिर्फ लेयर्स आ गए हैं। एंड इफ यू वांट वन मोर डीप लेयर लाइक द थर्ड लेयर, सो व्हाट यू गोना डू इज, हमने पहले कान से लिया था, अब हम यहाँ से तो आईब्रो टिप, मतलब ये जो आईब्रो का ये पार्ट नहीं है, माउंटेन पार्ट, यहाँ से गोना टेक दिस एंड यू नो एंड सेम पार्ट, सेम प्रोसीजर है इसका भी। वो कॉम बेटर रहेगा लेकिन उस पर पता नहीं हो नहीं रहा है मुझसे, तो हम गोना यूज दिस कॉम ओनली। I'm looking funny enough, but that's okay. अब हम फिर से टाई करेंगे इसको, थोड़ा नीचे लेके आती हूँ इतना। एंड इसको फिर से ऐसे, तो वो क्या है, इवन रहेगा। शेप अच्छे से दिखेगा, वरना वो बहुत ऐसा, मतलब इन दी एंड इट वुड लुक लाइक अ पार्लर वाला पूरा अच्छे से किया है, वो लोग ऐसे ही करते हैं।
hope you can see the layers and you know everything. Like अभी इतना वॉल्यूम हो गया मेरे हेयर में. Okay, so I'll just show you all पीछे का साइड. ठीक है. एंड आई थिंक आई रियली लाइक माई हेयर एंड लेयर्स अच्छे दिख रहे हैं मेरे बालों में अभी. सो आई लाइक इट एंड इफ यू वांट यू कैन डू दैट स्टफ. एंड बाकी तो आई रियली लाइक इट एंड इट्स मोर वॉल्यूमी एंड मोर लाइक. So yeah, I like it. And if you like the video, do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon below for the next video update. Follow me on Instagram and yeah, so do not forget to stay happy. I love you guys and love you so much. Thank you for watching and yeah, bye.